Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Can I start? आ गए सब 37 है 68 चलो हेलो मैम। हाँ जी हाँ, अभी असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हुई है या अभी? अभी इसको मैजिक को खत्म कर देती हूँ मैं जरा क्योंकि अभी G3 का लेक्चर था, उनको बोला गया कि 15 में हुआ, बट अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है। देख लेते हैं हाँ, अभी मैं भी चेक कर लेती हूँ मेल भी कोई आई है तो मेरे पास भी आती है देख लेती हूँ मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की ना आपसे ये आया तो नहीं नहीं मैम, यहाँ पे ऑफिशियली साइट्स पे कुछ नहीं आया, बट अभी G3 वालों ने जब उनको लेक्चर्स में पूछा था तब वो बोल रहे थे कि एक्सटेंड हो चुकी है 15 तक। एक मिनट में 2 मिनट दो मैं कंफर्म कर लेती हूँ एक और एडमिनिस्ट्रेटर हैं हाँ उनसे बात कर लेती हूँ 1 सेकंड होल्ड हाँ। करो Yes, it is confirmed that for you people only MC online, the date has been extended till 15th of June. तो आप सबकी डेट शीट जो है ना आई मीन असाइनमेंट सबमिशन डेट जो है इट इज अप टू 15th ऑफ जून टिल नाउ ओके, इसको ही थैंक यू। डेडलाइन आप मान के चलिएगा कंफर्म हो जाएगा और होपफुली आज आपके पास SMS या व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. प्रखर को बहुत खुशी हुई है हाँ चलो सबके लिए गुड न्यूज है ये तो मैंने इसलिए कंफर्म कर लिया कि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा सो नाउ यू जस्ट रिलैक्स अब आपके पास हाँ 2 वीक का समय आ गया ना चलो या चलो करें स्टार्ट अब
मैम असाइनमेंट में ईआर डायग्राम ने वो सब प्रिंट निकालनी है या फिर ड्रॉ करना है? वो बन जाएगा एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में आप वो उसका प्रिंट प्रिंट निकाल लीजिए। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि ये डायग्रामिंग वाली चीजें डायग्रामिंग वाली ना, चीजें तो हमें नहीं वैसे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा। तो बस रहेगा कि आप एमएस वर्ड पे उसको ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर और ये मैंने टिप भी दी थी आपको कि आपका जो है ना, क्या नाम है, प्रैक्टिकल मतलब जहाँ सेंटर डलेगा वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एक हैंड्स ऑन हो जाएगा उस पे। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए और अब मैम अब हाँ बोलिए बोलिए। 40 मार्क लैब रिकॉर्ड के यानी कौन से हो? क्या जो हम क्वेश्चन में लिखा है 40 मार्क के क्वेश्चन है हाँ, असाइनमेंट में, और दूसरे 40 मार्क का क्या है लैब रिकॉर्ड का मीन्स? आप दिखाओ, आप शेयर कर दो, मैं स्टॉप करती हूँ। आपके पास है क्वेश्चन पेपर अभी असाइनमेंट का? पढ़ के थोड़ा समझ पाऊंगी ज्यादा बेटर आपका कंसर्न क्या है। या तो पूरी लाइन पढ़ दो आप। पढ़ दो आप। हाँ 2 मिनट में मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। Your lab record will carry 40 marks. ठीक है। ठीक है। और रेस्ट 20 मार्क आर योर वाइवा स्कोर एंड असाइनमेंट 40 मार्क। हाँ एक्चुअली क्या है आपका, क्या है आपका जो वाइवा आई मीन जो वाइवा असाइनमेंट सबमिट होगा, वो असाइनमेंट टोटल उसकी सबमिट मार्किंग जो है आउट ऑफ टोटल 25 होगी। जो है आउट तो ऑफ आपके 20 25 नंबर तो है ना वो तो आपके रिटर्न 20 पार्ट के नंबर तो होंगे, है ना वो 5 रिटर्न नंबर जो है पार्ट ना के वो होंगे, आपके 5 वाइवा में नंबर हाउ जो यू है ना वो आपके रिस्पॉन्ड वाइवा में हाउ यू रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके अकॉर्डिंग। Your voice is not clear. नॉट क्लियर। ये मेरी इको क्यों हो रही है? मैंने तो आज एक ही जगह से किया है। मैम 2-3 लोगों ने माइक ऑन किया, इस वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं म्यूट कर दूं। अब देखो, अब ठीक है। Yes मैम, it's Yes, clear ma'am. now. It's audible. हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया आपको कि ईआर डायग्राम और डीएफडी जो बनाना है आप एमएस वर्ड पे बनाओगे और उसका प्रिंट आउट लेके वो अपनी रूलर शीट पे चिपका दोगे। ठीक है। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? डेडलाइन बढ़ डेडलाइन चुकी बढ़ है चुकी है और ईआर और डायग्राम ईआर डायग्राम डीएफडी के डीएफडी बारे के में हमने बारे बात में कर हमने ली बात है। कर ली है। और उसकी जो और टोटल उसकी जो मार्किंग टोटल है मार्किंग है आपकी वो 25 वो मार्क्स 25 की मार्क्स होगी का होगी असाइनमेंट का। असाइनमेंट का। Neil, please mute. और वो मैंने बता दिया आपको कि 20 मार्क्स का आपका जो आप फाइल बना के लाओगे एक तरह से, उसकी उसको कितना मेहनत से आपने बनाया, कितना ब्यूटीफाई किया है। हमें ब्यूटीफाई तो नहीं कहेंगे, हाँ कितना करेक्ट लिखा है, कितना अप्रॉक्स लिखा है, ये सब पैरामीटर पे देखेंगे। और 5 मिनट 5 मार्क्स जो है वो आपके इस बात के लिए होंगे कि आपने उसको कैसे तैयार किया है। ऐसा होता है ना कि असाइनमेंट के टाइम पर स्टूडेंट्स के सभी के रिश्ते भी सब याद आ जाते हैं और सब हो जाता है, मम्मी पापा दीदी भैया अंकल आंटी पड़ोसी सब मिलकर असाइनमेंट बनाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं स्मार्ट वर्क कीजिएगा, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने 4 जगह से हाथों से ये असाइनमेंट लिखवाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात पे। हैंड राइटिंग मैं तो सबसे पहले वही चेक करती हूँ और उसके बाद बीच में से क्वेश्चन पूछ के फिर पार्ट हो जाता है कवर। चलो एनीवे मैम मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जी। ये 40 असाइनमेंट में 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो दूसरे 40 मार्क्स का लिखा है लैब रिकॉर्ड पे, तो वो कौन से ये पता नहीं चल रहा है मेरे को। एक मिनट रुको, मैं निकाल ही लेती हूँ आपका असाइनमेंट। आपका ना मेरे को पूरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ये तो था क्वेश्चन पेपर, कहाँ गया आपका असाइनमेंट? यहाँ मैंने सब डाला था ना। खुल ही नहीं रहा है।
जुलाई 2022। दो 217 पे ही जाती हूँ मैं। तो एल आ गया। इसमें सेकंड लाइन में लिखा है। इसकी सेकंड में हाँ यही अच्छा। एक मिनट, कोर्स को ठीक है 100% मार्क, वेट 30% हाँ, इसमें आपको क्या पूछना है बताओ। कि जो ये योर लैब रिकॉर्ड विल कैरी 40 मार्क्स, यानी कौन से ये लैब के बोल रहे हैं? ये अभी जो क्वेश्चन नीचे दिए वो हम ड्रॉ करेंगे उसके बारे में। हाँ, ये देखो प्लान 2030। हाँ ये असाइनमेंट के हो गए 40 मार्क्स। हाँ यही मतलब क्वेश्चन आप देखो, एक एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स कैरी कर रहा है ना। तो 40 मार्क्स के हिसाब से 25 का रेशियो निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। आप अपना इतना ही ऐसे ही मार्किंग मतलब ऐसे ही स्टॉक लिखिएगा जिससे आपको हर क्वेश्चन में से 10 में से 10 मिले। आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये इतने वास्ट है ना क्वेश्चन। अगर मैं इसको 5 6 नंबर का बना देती तो मैं आपकी वो पूरी पाती। ठीक है, इसीलिए इसको 10 मार्क्स का रखा गया कि 40 मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम इसका हिसाब से निकाल लेंगे। ये है मैम द क्वेश्चन। हाँ बोलो। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है ना कि 40 नंबर के जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो हैं, उसके अलावा 20 नंबर वाइवा के हैं, इसके अलावा 40 नंबर हैं जो उसके हैं, क्या बोलते हैं, लैब रिकॉर्ड के, उसके बारे में पूछा ये है। लैब रिकॉर्ड असाइनमेंट कोई तो बोल रहा है ये। अच्छा, आप ये वाला लैब रिकॉर्ड बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, ये वाला असाइनमेंट मार्क्स ये हो गया, मैक्सिमम मार्क्स ये हो गया। कहाँ लिखी है ये लाइन जो आप अभी पढ़ रहे हो? मैम टोटल 100 का है ना, ये मैक्सिमम मार्क 100 40 हो गए इसके, जो ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर दूसरे 20 हो गए वो वाइवा के। ठीक है, बाकी बचे हुए 40 कैसे होंगे? वो लैब रिकॉर्ड के होंगे, जो लैब रिकॉर्ड प्रैक्टिकल वाला यस जो मैम। आपका प्रैक्टिकल पार्ट हम कर रहे हैं ना, जिसकी क्लासेस के लिए आज हम इकट्ठा हुआ है, जो मैंने आपको डे 1 बताया था कि आप अपनी गूगल ड्राइव बनाकर उस पे आप वो सेव करते जाओ ताकि हम उसको देख सकें। वो सब भी वैल्यूएट होगा ना। हाँ, वो उसी के लिए भी है। मुझे लगा इसी में कहीं अलग से लिखा था, मैं उसी को ढूंढ रही थी। ठीक है, यही वाला पॉइंट पढ़ रहे हो ना, ये वाला है ना? यस मैम। हाँ, अब मेरे को क्लैरिटी को, मैं ऊपर ढूंढ रही थी लैब रिकॉर्ड कहाँ लिखा है। ठीक है मैम, क्या हमें ये प्रैक्टिकल सेशन 1 और 2 के होमवर्क मिल सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, तो उस सेशन में क्या होमवर्क मिला हमें पता नहीं है। एक मिनट, कोई पूरा परफॉर्मा हो या पूरे सेट ऑफ क्वेश्चन जो हमारी लैब में होंगे एक साथ आप मेल कर दें हम लोगों को, दैट विल बी ग्रेट। आप लोगों ने देखा ही नहीं है, इसका मतलब मैंने कितनी बार ये बताया है, ये सारी चीजें मैंने एक ही जगह पर रख दी है, आपने किसी ने देखा ही नहीं है। ये आपकी मेहनत बचाने के लिए मैंने काम किया और आप लोग देखते ही नहीं हो। यहाँ देखा आपने, ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन, यहाँ सब 20 के 20 क्वेश्चन डले हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं इस वाली बुकलेट से पढ़ती हूँ थोड़ा सा छोटा दिखता है, थोड़ी क्लैरिटी कम होती है, तो मैंने मेन पॉइंट सारे यहाँ पर उठा के डाल दिए हैं। ये आपके लिए ही डाले गए हैं बस। तो ये देखिए ना, सारे हैं वही वाले, ये वहीं से उठाए हैं, कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिया है। तो ये सारा कुछ वही है, लिखा भी है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट आर टू बी अटेम्प्टेड ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड लैब सेशन। ये सारा कुछ लिखा है। अब आज का जो लैब सेशन है वो आप लोग कंडक्ट करोगे, सब लोग मिलकर करोगे। और लास्ट क्लास में मैंने पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी थी। अब मैं इसी वाले ब्लॉग पे जाके आपको एक और चीज बता रही हूँ, जिसको आपके लिए मैंने अपडेट किया है कल। ये आप लोग लास्ट क्लास में मुझसे मांग रहे थे ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने कहा था वो दे दीजिए हमें सैंपल की फॉर्म में। तो आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे जाएंगे तो वो पूरी की पूरी फाइल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। आप जस्ट इसको रेफर करो और आज से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो उसमें था हमारी गाइडलाइंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी खुल जाता है, आपको दिख जाएगा। यहाँ मैंने नया टॉपिक ले लिया है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो तो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है ही है। ये एक और सोर्स आ गया, अब आपके पास 2 अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। तो आपको
अगर आप यहाँ पर देखो, एक मिनट मैं आपको पूरा बताती हूँ, थोड़ा सा अभी भी गैप है आपके इस पार्ट पे, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। यहाँ देखो आप, ये आपका पूरा इग्नो का पूरा स्ट्रक्चर है एमसीए का। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा हमारा ये एमसीए का ये वाला पार्ट जिसको हम डील कर रहे हैं, 213 और 217 की जो हमारी लैब है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। अब क्योंकि ये MCS-217 का मतलब कि पेज बना है, तो यहाँ पर पूरा कोर्स करिकुलम आपका पूरा सेशन वाइज दिया है। इग्नो ने मुझे आपको थ्योरी सेशन में 6 क्लासेस दी है पूरी करवाने के लिए, और हर सेशन जो है वो 2 आवर्स का गिवन है। तो वही पूरी प्लानिंग करके मैंने यहाँ डाली है कि जो इस प्लानिंग डॉक्यूमेंट को रेफर करेगा वो उसको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। पहली क्लास में कितना हमारा गोल मैंने सेट करके आती हूँ मैं, या जो भी है हमने पूरा एक प्लान करके रखा है। थोड़ा सा 10-20% आपको मालूम है हर जगह डेविएशन चलता है, वो होगा। उसके बाद यहाँ तो यूनिट वाइज ओवरलाइन एक आउटलाइन व्यू था। आप यहाँ पर देखो हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक आपके इग्नो ब्लॉक से वेरीफाइड है, ये सब कुछ अलग से मैंने अलग से नहीं डाला, वहीं से सारा डेटा ये रेफर किया है। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। जो थोड़ा बहुत स्टफ मुझे अच्छा मिलता है वो मैं डालती जाती हूँ। इवन इट सीम्स टू बी डुप्लीकेट समटाइम, बट इट्स ओके। मुझे तो एक जगह पर आपको सारा रखना है ताकि इस सब्जेक्ट के लिए, मेरे सब्जेक्ट के लिए आप परेशान नहीं होंगे। आप एक जगह पर आओगे, ऑनेस्टली सब कुछ कर लोगे, तो कहीं और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। असाइनमेंट के क्वेश्चन का लिंक भी है, अरे यहाँ था, मैंने लिंक पे क्लिक नहीं किया था, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने आपको बताया था, जहां पर जाकर आप आराम से, बहुत सारा स्टफ है, अपडेटेड स्टफ है, रुड़की का स्टफ है, एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सब यहाँ पर डाला हुआ है। अब जो मैंने आपको प्रोजेक्ट अभी दिखाया है सिनॉप्सिस वाला, वो पूरा आपका वो फाइल है। मैं एक और चीज दिखाने के लिए वहां गई थी बेसिकली, वो तो भूल ही गई हूँ। रुको, जो समझाना था वो पॉइंट ही नहीं हुआ। हाँ, ये जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये सब्जेक्ट है, आप ऑलरेडी कर रहे हो। सेकंड में ये सारे सब्जेक्ट है, आपको करने होंगे आगे। प्रैक्टिकल हर जगह ही आपको दिख रहा है। ये थर्ड सेमेस्टर में आप देख रहे हो, सब कुछ वही, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब है। जो मेन मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला देखिए। यहाँ पर ये जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जो ऑलरेडी आपका 12 क्रेडिट का है, इसकी पूरी तैयारी आपका, और कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे सब एडवांस टॉपिक आए हुए हैं। कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं है। तो वो कैसी फाइल बनेगी, कितने पेजेस की होगी, सिनॉप्सिस क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, क्या वहां पे 2-2 चीजें क्यों आती है, वो सब चीजें मैंने ना इस फाइल के अंदर आपके लिए अवेलेबल करवा दी है, ये वाला। अब आप देखो, ये उसी टाइप का वो इंडेक्स पेज है। ये पूरा मेरे मतलब जो टॉपिक है, इस बार नया टॉपिक लिया मैंने, newfashionable.com। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इग्नो से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। उस स्टूडेंट के 151 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200 सॉरी। इस प्रोजेक्ट में भी आपका जो पुराना सिस्टम है, अभी नए का तो मुझे अब गाइडलाइंस नहीं आई है, पुराने सिस्टम में क्या होता था, ये पूरी फाइल जो है ये 150 मार्क्स की है, और जो 50 मार्क्स का है वो वाइवा है। और स्टूडेंट को 200 मार्क्स में से, यानी कि 200 में से नंबर गेन करने हैं, 150 में से उसको 50% आने जरूरी हैं, और बाकी के जो 50 मार्क्स हैं उसमें से भी मेरे 25 आने बहुत जरूरी हैं। मतलब अ स्टूडेंट शुड बी पास ऑन बोथ द कंपोनेंट्स, और 50% मिनिमम आने चाहिए। अगर 50% नहीं होंगे तो आपका वाइवा रीशेड्यूल होगा। तो वही जैसे हमने पिछली बार किया था, तो वही सारी चीजें हैं, बट नए टॉपिक के साथ है। सब कुछ मैंने दे दिया आपको, सब कुछ, एवरी थिंग इज रेडीली अवेलेबल हेयर। आप उसको रेफर करो, पीछे क्वेश्चन उठाते जाओ और उसको करते जाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ शेयर कर दो। मतलब ये वाली प्रैक्टिकल क्लासेस का मोटो यही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 90 डेज का एफर्ट आपको दिखना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। अब आप यहाँ मेरे को एक और पॉइंट आपको बताना है। ये देखो, वो जो पीछे हमने किया था वो तो सब है ही है, और ये अभी क्या चल रही है हमारी सिनॉप्सिस। ध्यान से देखते जाना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके नंबर ऑफ पेजेस की लिमिट भी बढ़ गई है, बट कोई बात नहीं, दैट इज नॉट ए मेजर इशू। आपने वो 25 वाला रूल याद रखना है। अब यहाँ देखो, जब मैंने सिनॉप्सिस, पिछली बार मैंने बताया था सिनॉप्सिस बनाना आपको बताया था, आज मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब बनेगी, जब इग्नो से मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा कि ओके सुमिता, योर सिनॉप्सिस इज ओके, व्हाटएवर आइडियाज यू हैव शेयर्ड थ्रू योर सिनॉप्सिस, इट इज ओके, वी आर वी थिंक दैट यस योर प्रोजेक्ट कैन रियली सर्व टू द सोसाइटी और टू द इंडस्ट्री। जब ये चीजें वहां से ओके आ जाएगा, ओके होने के बाद भी
कुछ पैरामीटर्स मैंने बताया था, कुछ कमियां निकल सकती हैं डीएफडी या ईआरडी या किसी भी लेवल पे, वो मुझे करेक्ट करने को वो राय दे देंगे, वो मुझे करेक्शन करनी है। और वो करेक्शन जो है वो इग्नू के उस ऑफिशियल को कैसे पता चलेगा कि सुमिता को ये करेक्शन बताई थी इग्नू ऑफिशियल्स ने, तो यहाँ पर उस बात का आंसर आपके सामने आ रहा है। अब देखो अब की बार क्या बन रहा है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपका अगर अप्रूवल आ गया तो ये वाली जो 24 पेजेस की फाइल है ये भी पहले लगेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, एज इट इज लगेगी। यहाँ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इवन इफ द इग्नू ऑफिशियल हैज गिवन सम नेगेटिव रिमार्क्स ऑन योर वर्क, स्टिल this 24 page or 25 page will be at the beginning of your project report, number 1. Number 2, project report जो है उसमें फिर से वो सारी चीजों का डुप्लीकेसी हो रहा है। आप देखो फिर से वो इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर बहुत गैप आता है। स्टूडेंट सीधा रिपोर्ट की अपडेटेड कॉपी वहां पे जमा करा देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए मैं एक एक छोटी से छोटी बात आपको बता रही हूँ ताकि आपके साथ वो सिनेरियो ना हो। आप सब वैसे ही ऑलरेडी इतने पैक्ड हो, वर्किंग हो, वैसी मुश्किल से सब हो पा रहा है, तो ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा समझने के लिए और समझाने के लिए भी। तो यहाँ पर देखो वो सारी चीजें रिपीट हो रही है। मान लो मेरी डीएफडी रॉन्ग थी, मान लिया एक एग्जांपल के लिए हम मान के चले मेरी डीएफडी में उन्होंने सिनॉप्सिस में कुछ कमियां बताएगी, तो यानी कि ये वाली मान लो ये वाला जो मेरा डीएफडी बना हुआ है ये मुझे इम्प्रूव्ड करके लगाना है। तो इग्नू ऑफिशियल्स जब देखेंगे कि पुरानी वाली डीएफडी में कुछ ऐसा था और ये वाली ईएफडी में है, तो उनको पता चल जाएगा आपके अपने रिमार्क्स देखने के बाद भी, और ये वाली डॉक्यूमेंटेशन का एक अपडेटेड वर्जन यहाँ पर होगा। और अगर सब कुछ मेरा ठीक ही है फिर तो सिमिलैरिटी होगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से आपने दोनों वर्जन जो है ना अपने उसके सॉफ्टवेयर वर्क के आई मीन प्रोजेक्ट वर्क के रखने हैं। वन इज इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस एंड अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। आल्दो यहाँ पे छोटी सी मेरे हिसाब से गलती है, वो मैंने पूछा तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने एंटर मार दिया। तो ये रेक्टेंगल होना चाहिए, ये जो एंटिटी आपको दिखाई गई है यहाँ पर जहां मेरा माउस पॉइंटर रोटेट कर रहा है, ये रेक्टेंगल लगना चाहिए। वो एंटर लग गया तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये वाली गलती मत करना, वैसे तो आपको सब ईआरडी में पता ही है, बट ठीक है वो भी मैं कवर करूंगी। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। हाँ जी बोलिए। सो दिस विल बी इन आवर 4th सेमेस्टर द प्रोजेक्ट थिंग। यस, बट इसकी लर्निंग जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दे दी गई है ताकि आप अपना थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, या एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आगे तो नए नए टॉपिक आ रहे हैं। अभी देखो मेरी बात खत्म नहीं हुई है, वो सारी चीजें 30 के 30 आई मीन 25 के 25 पेजेस जो है दे आर रिपीटिंग अगेन, राइट। तो अभी आप देखो अब आ गया नया पार्ट। रिपोर्ट में हमेशा आपकी कोडिंग पार्ट, अब आप चाहे .NET, PHP, C# कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले रहे हो, उसके कोड को कॉपी पेस्ट करो, Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे आप MS वर्ड की फाइल में, सो दैट यू कैन गेट द प्रिंट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो है यहाँ से इसका प्रिंट लाना, मतलब सारी कोडिंग पार्ट जो आपको दिख रही है। अभी एक और नई चीज आनी वो भी मुझे बतानी है आपको, पहले आप समझ लो, क्योंकि ये पार्ट फिर आगे कभी नहीं डील होना। बस सीधा हम तो ये कहेंगे हम आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस अप्रूवल के लिए भेजो और ये करो वो करो। आल्दो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि पुराने वाली एमसीए में 4th सेमेस्टर में एक मिनी प्रोजेक्ट भी होता था, और मेरे हिसाब से वो अभी भी होनी चाहिए, बट अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से अभी हमें कहीं मिनी प्रोजेक्ट वर्ड कहीं नजर नहीं आया है, तो इसलिए मैं भी अभी आपको कुछ नहीं बता पा रही हूँ। तो हो सकता है ये खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिल जाए, तो आपका माइंडसेट तैयार रहेगा, क्योंकि पहले वाली एमसीए जो थी वो 3 इयर्स की थी। ठीक है, तो वहां तो 4th सेमेस्टर में हो जाता था, यहाँ आपके लिए भी तो ये नया है ना ये सब, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बट एक इग्नू की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोजेक्ट में पूरी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करना ये आसान काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद 2nd सेमेस्टर में आपका मिनी प्रोजेक्ट आ जाएगा, जहां तक ऐसा लग रहा है, पर अभी कुछ आया भी नहीं है तो इसलिए मैं श्योर भी नहीं कह सकती हूँ, पर आना चाहिए। जिनके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस, जो इंडस्ट्री में कोई जॉब वॉब नहीं करे, जो बिल्कुल एक आर्ट साइड का या दूसरी स्ट्रीम का स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करता है तो उसको एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। और इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फर्क ये होता है कि इंटरनल वाली हमारे हाथों में होती है, मतलब कि हम उसको हम ही आपके गाइड बनते हैं, हम ही कमियां बताते हैं, हम ही आपको हेल्प करते हैं हर लेवल पे। हाँ, लेकिन उसका भी वाइवा होते हैं, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, वो वाइवा लेने के लिए ऑफिशियल जो है ना अगेन इग्नू से हमारे साथ बैठ जाते हैं, मतलब उनके सुपरविजन में सारा काम होता है, कहने का मतलब ये है। और जो एक्सटर्नल वाइवा होता है वहां तो सब कुछ बाहर है, एग्जाम सेंटर भी बाहर है, आपके एग्जामिनर भी बाहर है के बाहर के हैं, सब कुछ, वहां हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, अब ये देखो
आपने, अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करो, सिनॉप्सिस में क्या कोडिंग थी, यस और नो? जल्दी से बता दो, मैं भूल जाती हूँ यार, एज फैक्टर है ना, तो थोड़ा बता दो। सिनॉप्सिस में थी क्या कोडिंग, यस और नो? नो। नो मैम। क्या सिनॉप्सिस में आपको ऐसे आउटपुट स्क्रीन वगैरह देखी थी? हमने तो बनाया ही नहीं था, तो ये कहाँ से आएगा? तो मान लो अब तो इन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया था ना सिनॉप्सिस में, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब मेरी एप्लीकेशन डेवलप हो गई है, तो इसका मतलब मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ। तो ये भी लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसमें? रिपोर्ट में। कभी कभी स्टूडेंट तो ऑलरेडी सब कुछ तैयार होता है, वो सोचते हैं चलो यार तैयार तो है, दिखा दो। इग्नो वालों को दिखा देते हैं हम सिनॉप्सिस में भी, नहीं दिखाना है। This is as per the IGNO guidelines. This is the specific part which is covered under the project report format only. तो वही डालना है। ये सारी इंटरफेसेस जो भी है ये डाली गई हैं, जो जो इंटरफेसेस इस प्रोजेक्ट का पार्ट थी वो सब डाल दी गई हैं। और एक रेफरेंसेस है, अभी वो भी दिखा देती हूँ। ये टेस्ट केसेस बने, उसमें टेस्ट केसेस थे क्या हमारे सिनॉप्सिस में, यस और नो? यस और नो? नहीं। जब कोड ही नहीं किया तो टेस्ट केसेस कैसे बन जाएंगे अभी, है ना? तो ये टेस्ट केसेस जो रन किए गए हैं वो सारे यहाँ पे बनाए गए हैं। ये टेस्ट केसेस आपको अपने प्रैक्टिकल पार्ट में भी करने हैं। ये सारे वो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो सब दिखा दिया गया है। टेस्टिंग की अप्रोचेस थी वहां पर, है ना? लेकिन हाँ, वहां मान लो मैंने बीटा टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग नहीं डाली थी, और अब मुझे लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बीटा टेस्टिंग मुझे करके दिखानी चाहिए, तो आप वहां पे जो चीजें हैं उसके अलावा भी 10-20% अगर चेंजेस होते हैं तो कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो अपने आप ऑब्वियस है कि जब चीजें एग्जीक्यूटेबल मोड में आती है तो डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट होता ही होता है, राइट? तो ये सब आएगा। हाँ, फ्यूचर स्कोप जो है मैंने ये बताया था, आपसे कोई बाद में पूछने नहीं आएगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो लिखा था वो किया है अपडेट या नहीं किया है, नो वन। बट व्हाट इज योर माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट फ्यूचर स्कोप, दैट मस्ट रिफ्लेक्ट अंडर दिस फेज। तो ये फ्यूचर स्कोप भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट है, ये आना चाहिए, ठीक है? एक और बिब्लियोग्राफी यहाँ पर डाल दो, मेरे हिसाब से और भी चीजें आनी चाहिए थी, और वो क्या है? जैसे मान लो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज डालते हैं, आपने बुक्स के नाम लिखे, बहुत अच्छी बात है। कौन से ऑथर की बुक रेफर की है, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया। इग्नो के भी एक दो ब्लॉक का नाम डाल दो, चाहे आप अपने ही 213 का मतलब नाम डाल दो उसका। अगर ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 7 मान लो, उसका उस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिली, तो वो भी लिख दो। इवन स्टूडेंट तो कई बार पेज नंबर भी लिख देते कि ये पेज नंबर से मेरे को मॉड्यूल या डेटा डिक्शनरी का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया था, बस वही चीज मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दी है, तो वो भी लिख सकते हो। पर अगर आप नहीं लिखते तो सिर्फ ये लिख देना। जैसे एक दो चीजें और मुझे यहाँ पे गाइड करनी है आपको। जैसे स्टूडेंट ये भी लिख देते हैं google.com, youtube.com, tutorialpoint.com, javateapoint.com। अरे लिखो आप ये सब, लेकिन जावा टी पॉइंट की बात करो या ट्यूटोरियल पॉइंट की बात करो या W3 स्कूल्स की बात करो, ये जितने भी पॉपुलर .कॉम्स है जो हमें हेल्प और हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें लेटेस्ट कंटेंट देते हैं, इसकी इस प्लेटफॉर्म पे आके आपने कौन से लिंक को पढ़ा, वो लिंक आना चाहिए, रादर देन द प्लेटफॉर्म का नाम आप लिख दोगे। facebook.com, माना आपको फेसबुक पे कुछ दिख गया, अच्छा सा दिख गया, किसी ने डाला है स्टफ और आपको जावा का कोड समझ में आ गया या कुछ भी है, आप लिंक लगाओ ना, आप उस प्लेटफॉर्म का नाम मत लिखो, आप उस प्रॉपर डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाओ लिंक के थ्रू। क्योंकि इस बिब्लियोग्राफी के डेटा से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ने किस किस जगह पर जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया है, और कैसे ये जो सक्सेस स्टोरी आपने क्रिएट की है ये कैसे क्रिएट हुई है, इसके पीछे बैकएंड क्या है, मतलब बस ये एक आइडिया निकालना होता है। तो बड़ा माइंडफुली लिखना है, सिर्फ प्लेटफॉर्म के नाम नहीं लिखने हैं। राइटिंग google.com, राइटिंग youtube.com will not serve the purpose. What you have done under these platform, using these platform, ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा मेरा इनपुट था जो मैंने आपको बता दिया। तो पूरा क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, सिनॉप्सिस क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या है, हाउ दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या चीज किस में आएगी, वो सब कुछ जो मैं बता सकती थी और जो मुझे बताना चाहिए था मैंने सब आपको बता दिया। जब भी आपके पास ये ब्लॉग का लिंक है, आपको जब भी देखना हो आप यहाँ पर आके हमेशा इसको क्रॉस चेक करके अपनी बात को ठीक कर सकते हैं। अब तक ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब जो आपका ये वाला पार्ट था, अच्छा ये तो हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी जैसे लास्ट टाइम में मैं प्रोजेक्ट बनाना है, तो
ऐसा ग्रुप वाइज बनाना है या सिंगल्स पे? नहीं, अभी देखो जो मैंने एक और पॉइंट बोला था, जो मिनी प्रोजेक्ट बनता था पहले ओल्ड MCA में, उसमें तो 4 का ग्रुप होता था, 4 स्टूडेंट कैन वर्क ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट। बट हाँ, नाउ अभी तक क्योंकि उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि आपका फाइनल मेजर एक ही प्रोजेक्ट अभी तक है, तो वो इंडिविजुअल ही बनेगा, वहां कोई आपने किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना है, वो इंडिविजुअल चाहिएगा। कौन से आंसर में लिखना आपने क्वेश्चन किया मिहिर? बोलो एक बार थोड़ा, कौन से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो आप? MCS 213 जी स्टैंड फॉर? नहीं समझ पा रही मैं। ओके, तो अब आप ये वाला अपना पार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन खुला नंबर हुआ है, हाँ बोलो बोलो। मैम ही वाज आस्किंग आई गेस इन 213 असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर जी। जी तो है ही नहीं, 4 ही देखे थे मैंने तो शायद। नो मैम, इन 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉट लैब। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ। दो 213, अच्छा जी। डेवलप SRS यूजिंग IEEE, जो मैंने अभी आपको पूरा फॉर्मेट दिया वो यही दिया है। IEEE का जो आपके इग्नो के ब्लॉक में भी लिखा हुआ है, वो पूरा इंट्रोडक्शन, पर्पस, वो पूरा फॉर्मेट है। मैम क्वेश्चन नंबर जी लास्ट वन। अच्छा, मैंने कौन सा पढ़ लिया? ई पढ़ लिया। अच्छा, लिस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विच इनेबल्स OSAS का नाम कुछ रखा होगा, ऑनलाइन ग्रेडिंग कार्ड जनरेशन। अच्छा, list specific requirement which enables OSS to run on both PC and mobile devices। हाँ ठीक है, बोलो क्या पूछना चाहते हो इसमें? मतलब आपका जो ये OSS सॉफ्टवेयर बनेगा, इट मस्ट बी कंपैटिबल विद डेस्कटॉप एंड एज वेल एज मोबाइल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी आपकी या रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर बनेगा, ये वाला पॉइंट डालना पड़ेगा, मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा उसको। मैम व्हाट इज OSAS? ये रहा ना, इन्होंने दिया हुआ, ये देखो। क्या लिखना है? हाँ मैडम, रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखना है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से वो दोनों चीजों पे रहेगा, आप वो पॉइंट बताओगे ना। मैडम, अगर हम वेब एप्लीकेशन के जरिए बनाते हैं तो उसमें तो एक रिस्पॉन्सिबल जो लेआउट होना चाहिए, बूटस्ट्रैप लिख सकते हैं, तो उसमें लिस्ट क्या बनाए? नहीं, लिस्ट का मतलब वो पॉइंट्स जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपको मेंशन करनी होगी। वो तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना मैडम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो आपको और तो कुछ अजम्पशन दी नहीं है, वो तो बस एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू मेक, इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली विद दैट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आल्सो, बिकॉज आप ये भी पॉइंट वहां पर मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मतलब बिकॉज नाउअडेज गूगल एज पर द अपडेटेड गूगल एल्गो, out of 10 transaction 9 transaction are on mobile only, so that is why this encourages us to make this software mobile friendly also, तो आप वो पूरा अपना उसका डाल देंगे, ठीक है? क्लियर? यस। Any other query from anybody side? Ma'am, please explain in English. Which one? This particular point, whatever we have covered till now? No, madam. Your session, your class is, what are you teaching is, please explain in English. Okay, fine. So the idea that I was communicating with respect to the given assignment question is that because it was the updated algo at the part of Google, and as our website they basically rank at the Google, then only this will serve to any kind of business, na? So Google has updated the algorithm, and accordingly, according to that algo, if your web application or your software is responsive with respect to the mobile, or we can say
it is a mobile first algo, and according to that algo, your web application or your software must be compatible with a mobile also. If it is not compatible, it is of no use, because out of 10 transactions, 9 transactions are through mobile only, right? So if it is not compatible with mobile, it is not mobile friendly, it is of no use for the digital world. So this is the only point that I was mentioning there, right? So now what you have to do, and I'm going back to that part. Yeah. So any other question from that project and synopsis section? Now, as per today's class, what you need to do, you need to develop a scope statement on the topic railway reservation system. Right now you have everything to be ready with you. You have all the reference point over here, all the documentation is there. You just give a thought to this railway reservation system, write your assumption first, because there are n numbers of areas can be possible under the railway reservation system. How you are going to implement your concept under this topic, that you have to share. I think it will be much better if I ask verbally to each and everyone. What do you suggest? Have you given a thought to this thing? This question is demanding your attention, that what you need to do, you need to build the software for a railway reservation system. And in this regard, you need to write a statement of scope. And if you want to you want to have an understanding of this part, that how to write a statement of scope, then this stuff will really help you. Any statement that gives a complete idea in terms of the objective, in terms of the timeliness, in terms of the budget and all, that is a scope statement. So every scope statement, I was able to find some idea over with respect to the other project that I am going to share with you. This is also one of the example of a scope statement. You all can see. You just go through with once so that you will get an idea. Then we will discuss on it. And then this idea you have to transform it into the RRS or railway reservation scope statement. If you are comfortable to speak, you can speak also. If you are comfortable to write, you can write into the chat window. Or if you want to showcase whatever you have written, because this question I have asked for in the last class also, but in that the other part was also covered. You can consider it as an example only. So your scope statement should mention each and every parameter in context of the things to be go ahead. PhD for students लिख दिया उसमें वीडियो में इसके प्रमोशन दिन और CC students हर PhD चुनेगा PhD impactful नहीं रहेगा तो CC CFT ESG CC फिर अगले वाले में CFT स्टूडेंट फिर CC फिर ESG CC CFT CC बल्कि CFT 2 बार ले लो. I hope you must be able to get some idea. Just keep sharing your understanding on what you are about to write under the scope statement. Yes? Ma'am, I had one question. How are we supposed to maintain lab records? You need to make a folder with your enrollment number and your name, right? And that folder must be the part of your Google Drive. So once I will make such a session so that I can one by one check the Google Drive of each and every person. I will give you the right so that you can share your work and I can just check it out. Because 40 marks, how I will assign marks for that thing until unless I will not see it. Or I have another idea also. You can create your own blog also. During the orientation program, one of the IGNOU official has given us this practice also. They suggested that you recommend the student that they can create their own blog also to showcase their work and all. So now if you will have everything in terms of blog and all, so that will again a kind of work for you. You can just share that link whenever anybody will ask for it.
That is also one of the way. What you suggest? If anyone has some better ideas than this, you can always share. I'm creating a blog sounds better. है ना? So even I was encouraged with this idea also, that yes, it is a good idea rather than maintaining. Can we make a chatbot? Who is going to manage all these things? Chatbot, automatic chatbot responsive with AI. Okay. Any other ideas? Then any other idea, or you can simply, if you are not comfortable in other things, then you can simply put all your data in a date-wise way under your folder, which is created with your enrollment number. So that once we will ask for it, you will showcase it, and then accordingly the things can be verified and all. Okay, let's give a thought to this thing and share your final. Till then, you just keep everything under this folder in your enrollment number folder, right? Now start talking about this question, that is scope statement of for railway reservation system. What you are about to write into this, because topic for everyone is similar. If you are comfortable to write into the chat window, you can do it. If you are comfortable to write into the MS Word, you just take your time. It is 2:47 now. I will be back at 3 p.m. You take your time, write the statement, show your statement or speak your statement as per your convenience, right? Ma'am, what's the question? And let me show you that one. Let me show you. Just a minute. This is the first question. Okay, ma'am. Statement of scope that describe the software. So this statement will give me an exact idea what we are about to deliver. Our ready product will serve what kind of functionality, right? If you want to have some idea about the tips, how to write it, then that tips are already there that you can refer, right? So I will be back by 3 p.m. You are having 10 to 15 minutes with you, right? And if someone has already written it, you can show it, no problem. So I will be back by 3 p.m.
Time up. Quickly answer into the chat window whatever question I have just shared with you. What is the first thing that comes to your mind when you think about the scope statement? If anyone has already prepared, then you keep sharing. User, passenger, registration, Mehir Dasani, okay. User login, admin login, form in which the passengers can fill its detail, payment gateway for payment, user profile, user travel history, list of user, okay. Any other? At present, 55 students are there. 60? So everyone keep typing your answer. Keep typing your answer. What do you understand by scope statement? How you are going to answer it? A railway reservation will provide the ability. Railway authority will be able to log in with their credential and update schedule for their arrival and departure. So Rajshri, you want to create railway reservation, this software for the administrative staff of railway, yes? It is not for customer reference and all, right? This is all your idea? User can log in, user can book the, अच्छा नीचे है इसका मतलब customer आएगा. Creating reservation, cancel reservation, view reservation, etc. View train schedule, generating report, update train schedule, very good. Only 3 people have responded. Waiting for others to answer. Everyone please participate. I have my paper pen to be ready with me, and whatever you are answering, whosoever is answering, I am mentioning. You have to register your name in my mind. Purpose of railway reservation which provide train timing. Okay, book reservation, bidding, cancellation, type of reservation through online mode to improve train. Okay, fine. Nothing is right, nothing is wrong. These are the ideas that you have to transform into the form of the software. It contains information about the train. Anjali, okay. Okay. सनी ये अभी टाइप किया या कहीं से कॉपी पेस्टेड वाला है? सनी देख रही हूँ अभी तो मैं पूरा पढ़ा भी नहीं. You have typed it yourself right now. Studio for automating the manual reservation of railway. मैंने बता दिया था लेना अलाउड है बट पता नहीं चलना चाहिए सोर्स का. User should be able to apply for the ticket of any train in any class and limitations of post in the ticket. ये बहुत बड़ी है स्टेटमेंट. आपने पूरा जिस्ट दे दिया है. चलो ठीक है. फाइन. हर्षिता, रिवेन्यू एनहेंसमेंट. मितेश क्या कहना चाह रहे हो? इससे समझ नहीं पा रही मैं. रिवेन्यू एनहेंसमेंट मतलब कुछ लिखना पड़ेगा ना आपको पूरी स्टेटमेंट में. दिस विल नॉट सर्व द पर्पस. थोड़ा सा इसको और एक डिस्क्राइब करो आप. हर्षिता, facilitate the passenger to inquiry about the train available on the basis of source and destination booking and cancellation of ticket to inquiry about the status of the ticket. थोड़ा पेज उसके पैसेंजर के और दर्दों को समझो आप लोग. और भी कुछ इनोवेटिव ऐड करो. ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है. Purpose to I mean, ma'am, that through the online reservation means several parties will try to get the reservation. Means if somebody has access to the ability to the access of users will increase.
So means if there is offline reservation, then I will have to go to the station and then book a reservation. Right, But right. suppose I don't have a time for that, and I missed my reservation. But I missed my reservation. That is my part. But for the railways, the revenue generation, there is a loss of for the revenue generation, right? That's why I'm saying that there is chance of revenue enhancement through that. Through this software. Yeah, Because through the software. you are enhancing the chances of accessibility to the software, na? To the Yes, this kind yes, of yes. services. Okay, okay. Now I got your Accessibility point. is increased. Okay, okay. Yeah, now I got your point. Now I got it. Okay. Consider the passenger to query about the train or even the rest of the source and destination documentation ticket. ठीक है. Purpose of the off to pre-plan and book ticket so that one can travel and plan their travel. कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स निकालो तो सबकी पॉकेट में है आंसर यार. It will allow us to provide facility to the user and to railway user passenger will be able to check the availability of the desired train on the path and okay. तरुण थोड़ा सा इलैबोरेट करो अपना आइडिया. ऐसे समझ नहीं आ रहा. मैं समझूंगी नहीं ऐसे. आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा. तरुण अगर आप कंफर्टेबल हो लिख के दिखाने में तो आप चैट विंडो पे लिख दो और डिटेल में. अभी पूरी बात समझ नहीं पा रही मैं. Yeah, ma'am. By improving this railway system, like we don't need to go for offline booking anything. Everything can be done in online, like booking or cancellation and checking of the train status and the ticket availability. Okay. So ठीक है. ठीक है. नील user will be able to search the train availability. Okay, whatever ideas are coming, they all are very great ideas. They all are very brilliant ideas. Nikita कह रही है user can log in, can reserve the seat, can do cancellation, train dimming, detail, can pay online, help this. Vishnu is saying using online reservation system, user and admin both can keep the details of these transactions along with these their logs and all. Okay, Sachin payment mode, ticket cancellation, ठीक है. Okay, now those who haven't answered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17. Only 17 people have participated. No problem, no problem. I'm maintaining the record of each and everything. Now those who haven't answered till yet, can you, whatever information it has been shared in the chat window, can you add some sort of innovation or creativity to these ideas? Any single idea can make, although everything is going fine, now I want to add a layer of innovation into this. Can anyone add on innovation to this part? Those who haven't answered, they are only supposed to, put their ideas now. You all are supposed to take the help from online world and you all are supposed to answer here. How I will get to know? These are the practical session and practical session will not go in the way the theory session are going on. It should be a two-way traffic here. Exact train arrival and departure timing. Okay. So would you suggest I should go for app development on railway or some, a mobile, I mean window application kind of या web application kind of, कौन सी मेरे को करना चाहिए? मैम वेब एप्लीकेशन. Okay, but Google तो कहते हैं, Mr. Google is saying that if out of 10 transactions 9 are on through mobile, so don't you think that I should go for the mobile app for this thing, railway reservation and all? No, ma'am. So we can use that web application in our mobile Google Chrome. Okay, fine. Improved and optimized service. Ritvik, how you spell it? थोड़ा सा अपना आइडिया बताओ. Improved and optimized service means all type of online, I mean railway reservation, ticketing and booking and all. In all aspect, you are looking for some sort of improvement. That's your idea. Yeah, ma'am. Sometimes there is server busy. Okay. So we maintain the server, optimized server.
Okay, that is your idea. Okay. No one has given a idea on to the innovation part. Ticket validation before enters the no ticket. एक वो कौन सा है? एक आई डोंट रिकॉलिंग दैट थिंग जिसमें अभी ट्रेन का स्टेटस क्या है? वो कौन सी ऐप चल रही है आजकल बड़ी? मतलब मान लो कोई जम्मू से Where भी is जा my रही। train? हाँ, वेयर इज माई ट्रेन, यस, दैट काइंड ऑफ थिंग आई वाज लुकिंग फॉर। तो वो बिल्कुल करंट स्टेटस बता देता है कहाँ पर इस टाइम ट्रेन चल रही है। तो या आई वाज लुकिंग फॉर दैट थिंग। ट्रेन उस वैन, तरीके के कई सारे ऐप हैं। ट्रेन वैन भी है कोई, मैंने नहीं देखा, चलो देख ही लेती हूँ। तो ये भी IRCTC का है। रिफंड विद इन 60 सेकंड। देखो कितनी जल्दी ग्रैब करती है ना ये बातें कस्टमर को, वो यही सुनना चाहता है, उसको 60 सेकंड में आप रिफंड कर रहे हैं। सही बात है, ऑनलाइन है तो सब ऐसे ही होना चाहिए। गुड। You can make train status like locate your train. Yeah, good. Where is my train? Mahesh has already answered. Mansi has train man. ठीक है। तत्काल सिस्टम, या मैं भी यही सोच रही थी कि इन चीजों की जरूरत कुछ ऐसे मतलब अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है कि हमको ये सेवाएं लेनी पड़ती हैं। पर ठीक है, ये कहीं आया नहीं था, अब आ गया। तरुण तारू हैज कवर्ड दिस थिंग। The system can suggest faster train routes like Google Map and all, right? Okay. पैसेंजर को एक सिंगल विंडो दे सकते हैं हम, हर चीज की जाना है तो अब। अच्छा, ये सब पहले ही होगा ना, कोई प्लान लेना पड़ेगा। एक्सपेंड करना हो तो कर कैसे भी चल सकते हैं। कैन वी इंक्लूड होटल बुकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग आल्सो इनटू दिस? व्हाट यू सजेस्ट? ओके, और इसके अलावा हम I will not suggest, ma'am, ओके because प्रखर। that's like, yeah, the हाँ, app will get cluttered. Like, so we have like separate things like OYO for hotel booking and IRCTC for just ticketing, No, like that like only. we can't neglect this. We can add on for that. Like if because we click on the particular thing, it should go for the drivers to the another application like that. we It can will be helpful. integrate, but again it's your idea. It's your idea. You think that the one area should cover in this part, na? But yes, if we think of in terms of passenger, if we are going out of Delhi and we are looking for a single window or a single umbrella where all the our challenges get resolved, so it can be possible. Again, it depends upon the kind of complexity that we want to add on to our software and all. Yeah, ma'am, we have And example of it. May I hmm, share with your permission? yeah, please. So we have apps like Paytm, which allow us to book railway ticket, book hotels, Hmm. book bus, and maybe mobile recharge and everything. So, but on their market, they are not doing good because they started capturing all the market. So we focus only one market and be the king of that market. Right. Yeah. Okay. How? What kind As of? we take the Yeah, example please. of that, like Yeah. we have a IRCT application. In that, we can particularly book for the hotels, book for the food. Like it's like add on to the kind of application. It will help with the passenger. If you want, you can use that, or else you can take Can the my this other application. application can be B2B kind of software? It can act as at times. Can we transform in this way? B2B level at present. Yes. Yeah. Yeah, sure. Nowadays, we also get the facility through some applications that while traveling, we can book our cabs from one destination to another, so that once we arrive, we can travel through that Okay. easily. Very. In terms of security, anybody would like to add on to this? How to ensure the security to this application? Yes. Any ideas regarding this?
Jayesh, For just securities, explain we your can point. use this cloud kind of storages, which will help. Just be a little Which will louder. help. Be a little Yeah, louder. for this, we can use cloud kind of technology, which will help in most of the if more number of passengers going to take the tickets, it will add on the servers. If multiple storage system, it will divide all the categories into different kind of servers, kind of thing. Okay. Any other inputs regarding security? Yeah, password encryption. Very good. Web application should have HTTP. Yeah, secured socket layer. Yeah. 128-bit encryption to the nearest hotel and resort location in RRS application for customer. भाई भूख भी बहुत लगती है, थोड़ा खाने पीने की भी बात की जाए. आई वांट कि कुछ कुछ पैकेज वगैरह काइंड ऑफ कुछ ऐड कर सकते हैं. You make a sauce button like in Ola or Uber have sauce security button, so if you feel like uncomfortable we can use this. Okay, fine. Any other component that you feel that can be added, although we are adding or not, that is not a major concern, but what can be added, because the relevant things can be added. Is there any facility not possible here? Yes. Okay. मैम हम इसमें ऐड कर सकते हैं डेस्टिनेशन जो होगा वहाँ पे घूमने लायक जो होगा म्यूजियम में एनीथिंग, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको. कर सकते हैं और पेमेंट के रिगार्डिंग उसको बहुत सारे मोड्स टूल्स दे सकते हैं ना, मतलब पेमेंट जो भी करेगा. राइट. ओके. और कोई डायमेंशन जो हमने छोड़ दी हो? ठीक है. तो आप सब इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा अपने पास, और अगर किसी ने किया है तो दिखाना है तो दिखा सकते हो. मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करूंगी तो आप शेयर कर पाओगे. है किसी का कुछ दिखाने में? आई थिंक नेटवर्क भी डाउन हो रहा है. चलो. ओके. पहली इंटरफेस पे क्या रखूं मैं? आप मेरे को थोड़ी हेल्प करो इस पार्ट पे. ये जो हमारी एप्लीकेशन आरआरएस की बनेगी, इन द फर्स्ट इंटरफेस व्हाट शुड अपीयर? कुछ आइडिया थोड़ा सा इंटरफेस के रिगार्डिंग, और कैसे आप चीजों को क्लब करोगे? ये जो अभी आपने बताया था कि जिस जगह पे मैंने बुकिंग किया है, let's say Nainital and all, I was planning to go there, so that information ऐप में, अच्छा वो पहले से बुकिंग में आ जाएगा. ओके. वो जो गेमिंग, अच्छा गेमिंग वगैरह का कुछ किया जा सकता है उसमें? People are free when they are traveling. So is there any idea that we can add on with respect to the gaming into this application? Yes, ma'am. We can introduce offline gaming because sometimes during travel we lost our internet, so we kind of get bored. Fine. Okay. What is the estimation in this regard? How will you calculate the estimation of this particular project? Anybody? Although it requires lots of research on this area, then only the things will come out exactly. But a little bit idea. Discount system. AK जगदीशन, हाँ थोड़ा बताओ डिस्काउंट सिस्टम क्या कहना चाह रहे हो आप? एयरवेज वेबसाइट. ओके मानसी, आप देखो, आप एनहेंसमेंट की तरफ मूव ऑन हो रहे हो. उसी एप्लीकेशन में हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना. कैब बुकिंग भी किसी ने बोला था, एंड नाउ यू टॉक्ड अबाउट एयरवेज वेबसाइट एंड ऑल. डिस्काउंटेड सिस्टम एक थोड़ा बताओ आप. एवरीथिंग इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, गेमिंग कैब. We are just exploring, Anjali. We are just exploring what all can be added. What all can be added to make it as a full-fledged application. Although yes, railway reservation app will serve the purpose of issuing and reservation of the tickets and all.
but we are assuming that what all could be the possibilities, how this can be enhanced. If we will follow the same traditional approach, then the things will not come out. Na? So we are just exploring all these things. We are not going to do all these things, but we are just exploring what all could be the related parameters. Okay, Dhirender has its own view. No need to provide game. ठीक है, it's okay. Frequent traveler discount. Okay. Now so we can give the discount coupon. We can book to 10 or 15 seats, refund one seat amount. Okay, fine. Regarding the location we are traveling to. Okay, fine. Anyhow, we can enhance the scope of this particular application. Any other thing that should be and that should not be. These are also the good idea that if anyone has some other way of thinking, we can also shop while traveling as online shopping section. Yeah, we can have it. Okay. How to, now give a thought to this thing that if you have to charge from me about this application, how will you charge and what will you charge for this? What all are the parameters that will come under your estimation? Because second question, it revolves around that part only. Now you all can see. We are working on commission. कमीशन पे होगा ना? मतलब कि यानी हम होटल बुक करवाएंगे कहीं से टिकट, तो हमें कमीशन मिलेगा ना उनको. Google, Facebook, YouTube, Insta, Twitter, they all are, earning commission as their major source of income. So why not we? हम भी कमा सकते हैं, है ना? चलो आइडिया है, तो हम कौन सा करने जा रहे हैं, बट एक आइडिया है कि ठीक है. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चाहते हैं. कहाँ गया पढ़ता. हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क दे रही हूँ. थोड़ा सा इसमें रिसर्च भी करना पड़ेगा आपको. एक एक चीज का एस्टिमेशन निकालना है. आप एक वैल्यू निकाल के लाएंगे नेक्स्ट क्लास से, प्रैक्टिकल क्लास से पहले. कितने घंटे आपको लगता है कि इस काम में आपको ये रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाने में लगेंगे. फिर आप 1 घंटे की कॉस्ट भी जज करेंगे, और कॉस्ट जज करते समय ये भी सोचना है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि हर मैन पावर की अपनी कॉस्टिंग रहेगी. फिर टोटल हमारी कॉस्ट निकल जाएगी. तो आपका एक रफ एस्टिमेशन मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर. और आप कोई भी एक एस्टिमेशन टेक्निक जो हमने कवर की है वो भी आप लगाना चाहो, कोकोमो मॉडल या समथिंग, वो भी आप लगा सकते हो. तो ये थोड़ा सा रिसर्च मांगता है इस काम पे. यू जस्ट अप्लाई थॉट टू दैट पार्ट, और तब आप इसको कर लेना. ठीक है, जो भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग निकालोगे वो मेरे साथ शेयर करना. देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. देन दिस वर्क कैन बी डन. और every time whatever you have input, you have just shared with me in the chat window, just copy paste that lines and just paste it into your MS Word file, so that you, when we will go through with your drive folder, then the things should be there only, right? Develop SRS, already shared with you the reference point or the reference file. Start creating SRS, and in the next class again we will be having discussion on this part, and I will try to finish this part also. Okay, how many of you are already familiar with the creation of the ERD? Quickly type into the chat window. Yes? How many of you are already know how to create a ERD? Just type into the chat window Y for yes and for no. You have to work on the basis of assumption. Anjali, पढ़ना yes no ज्यादा आ रहे हैं. No. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में ERD भी बताना पड़ेगा. हर्षिता yes, no ज्यादा आ रहे हैं. And not all the people have participated. It is for your reference. It is for your benefit only. No. Okay. Mukesh, yes. Sunny, yes.
नो ज्यादा है. ओके अभी कर ले क्या? नो ज्यादा आ रहे हैं. चलो एक let me brief you because we have sufficient half an hour so we can cover this part also. Although I was planning to have it in the next class, but no problem. We can cover it today also, and in the next class we will start creating the ERD on that part. So ERD is what which is called as an entity relationship diagram. Before going ahead on that part, because you all are already taking so many classes, so just make me clear what is entity, what single word or single line I can write here which give me an idea in terms of layman. What is entity? Anyone? Just quickly Table. type. Huh? Table. Cable? Table. Acha, Table. table. Okay, table. Fine. Any other thing? Any other idea from anybody's side? You can take any word, one word or one line also, not more than this. Schema. Schema, very good. Any other thing? Any single word that help me to create to understand the word, only word that is entity. Different module or nodes of our program. Okay. Any real thing? Any real thing? आपने बोला नोड भी बोला था. अब मेरे माइंड में भी कुछ आ रहा है, मैं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करती हूँ. आई वॉन्ट टू राइट ऑब्जेक्ट. कैन आई राइट इट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. सो एंटिटी और इंग्लिश वाली मैम ने थोड़ा मुझे समझाया था कि आप नाउन भी लिख सकते हो. इज इट ट्रू? हिंदी वाली मैम ने मुझे समझाया था संज्ञा भी लिख सकते हैं. हमारी बचपन की डेफिनेशन, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड एज अ संज्ञा, और इंग्लिश में नाउन, और आईटी में ऑब्जेक्ट, और दिस डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी. राइट? एवरीवन, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज? यस और नो? Yes. ओके. जिनको ईआरडी में थोड़ा सा पहले कभी नहीं बनाया वो थोड़ा जल्दी आंसर दें तो और अच्छा रहेगा. हमारा पार्टिसिपेशन से हमारा पार्ट और अच्छे से कवर हो पाएगा. ओके. अब मुझे ये बता दो थोड़ा सा, आप लोग जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता है वो भी सोच के बताना है कि किसको मैं कैसे पहचानूं. आई एम अ लेमैन, आई डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एंटिटी. आई डोंट नो. आपकी कुछ वर्ड्स से मुझे थोड़ा थोड़ा पता तो चला पर पूरा पहचान नहीं पा रही हूँ. हाउ आई विल आइडेंटिफाई एनी सॉर्ट ऑफ एंटिटी कि दिस इज एन एंटिटी. दिस माई मोबाइल, इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी. यस और नो? Yes. Yes or no? Your name can be an example of an entity. Yes. Facebook can be an example of an entity. Yes, ma'am. Our Google, Mr. Google could be an example of an entity. Yes, ma'am. Yeah. How will I identify? Can in layman terms anybody explain what is entity? उसके कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर से, इन सब चीजों से. Exactly, very true. Correct answer has already come. Characteristics. Characteristic. हमने इंग्लिश में 2-4 वर्ड पढ़े थे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सबको आ गई है. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, और एक और वर्ड हमें इंग्लिश वाली मैम ने सिखाया था क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और व्हाट वी कॉल इट एज अ एडजेक्टिव समटाइम, नॉट एडजेक्टिव, फीचर्स, फंक्शन, और क्या बोल सकते हैं इसको? समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ anything which can reflect some sort of characteristic, some sort of features, so that anyone can describe it. That is a kind of entity. So if I'm assuming that Anjali is our student,
and it means I can elaborate that yes, she is a student of MCA online program, she lives in Delhi and she is working. Whatever I know about Anjali, that all are what? In terms of ER diagram, they are said to be the attributes. So attributes are the properties. They are said to be the actually describing what should come here, or we can say it adjective. So every entity that can be described in terms of some parameters, that parameters are called as a different attributes. My name is Sumita, I live in Delhi, I am the approved academic counselor from IGNOU, I am associated with PCTI from the past 17 years, I am taking software engineering classes. All these things are describing the property of a particular person. Similarly, it means there are two parameters I have talked about right now. That first one is entity and another one is attribute. So attribute are describing words which are reflecting the characteristics of the entity, right? So now those who haven't done this exercise or this kind of diagramming approach earlier, are they clear on this part that what is entity and what is attribute? Just type into the chat window quickly. Either you are able to understand yes or no. Entity, are you able to differentiate between entity and attribute? Yes or no? I'm looking for if some no is there, so I will take another example to make you clear on this part. Very good. YY is coming. It means everything, everyone is clear on this part that what is entity and what is attribute. So now taking that liberty, now I'm going to have another term which is related with that of the entity relationship diagram, that is relationship. What is relationship? Relationship is a kind of association. Association means between different entities. So relation is a kind of association between these different entities, right? So in terms of actual, while creating the ER diagram, how do we have to find out the relation? So here comes the role of verb, or in Hindi we call it as a kriya. Verb are all action words. Either we are searching anything or we are copying anything, we are doing research on it. Whatever action we are taking, or in some simple terms, we can call it as an action word also. So whenever I'm going to define the relationship of any entity with that of the another entity, so that relationship will be described in terms of action words or relationship. Now, what is the relationship between you and me in this class? What name I should kept here? One entity is what? Students. Teacher. Another one is teacher entity. How these teacher और student entity are related with one name? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए. क्लास हो गई. कौन सी क्लास हो गई? टीचर टीचर स्टूडेंट. नहीं. समझ आ गया. सब यहाँ पर लिखते हैं. तो our relationship teacher, many student. So these one to many. One too many. Now when Sumita, then what type of association is this? Many to one. Many doctors are Many to one. many doctors, one patient. Many to one. Many to one. Many to one. Many students are participating in many students are participating in many webinars. N to N. Many to many. Many to many. Okay, fine. So you all are, so this degree of association between these two entities, they are called as a degree of association is called as a cardinality. There's a single term that we use here. So now you all are able to get the idea that what exactly is ERD. Yes, it is a data modeling tool which help us to create these two words that were very correctly mentioned here,
that is table and schema. What type of table, how many tables will be there into the database, what will be the exact data structure of that each and every field, what will be the data type, what will be the exact width, what will be the record length, everything can be captured by means of this ER diagram, right? So ER diagram is, yes, it is a data modeling tool which reflects the list of entities and their relationship to each other, right? Now, how to draw these diagrams and all? Before going on that part, let me take some examples of the key attribute. Every table must have a key attribute into it, which really help you to uniquely identify any record in a table. So that unique field is called as a primary key also. And you all can see, I'm going to highlight it also so that you all can understand. These are those fields in any table which are always unique. No, even if the two siblings are they are clones to one another, still they will be having a different roll number. Employee ID, it is again of unique nature. Customer ID, order ID, patient ID, all these fields which are unique to the table, that can be considered as a primary key. So primary key help you to uniquely identify the record out of a database. So now these are the different symbols. The way we have done in our synopsis part also, to represent an entity, I will not use any other symbol. There is only one symbol, that is rectangle. If I will simply press the enter key in a rectangle, then it will get converted into a square. So while creating the ER diagram, just take care of this aspect, that even if sometimes we have to write a bigger line or some bigger words, so we don't sometimes take care of this thing, that okay, just press the enter key. And in this exercise, what happens? The rectangle get converted into the square. So while creating ER diagram, be ensure on this part that you should use only rectangle. Your things should reflect like a rectangle only, or the entity should reflect like a rectangle only. Another relationship, to reflect the relationship, we have to make use of this diamond symbol, right? So diamond symbol will be used for representing your relationship with that particular entity. Attributes are used to reflect the what we call it as a properties or characteristics or describing word of that particular entity. If some entities are weak entities are those entities which depend on another entity for their survival, right? Like I'm saying Sumita, Rani, Thukral. So Rani is a kind of entity which can't survive independently. Middle name, what we call it as, right? So it will depend on other attributes or other entity for their survival. So that kind of entity which cannot survive alone, that is kind of weak entity. Similarly, weak entity relationship is also there. It is described with the help of double diamond symbol that you all can see here, where my mouse pointer is rotating. So sometime in banking, I'm taking one example from the banking industry. I'm having a account and let's say I want that my son should also have account in the same bank. So I used to approach to the banking officials. I told them that I want to open my son account also. So he tell me that okay, he's a minor. We can't open a account for them. So what message I want to convey you, because he's a minor, so bank cannot provide them a full-fledged banking account feature to that particular candidate. So that candidate, which is called as in this example as a minor one, that will be treated as a minor with respect to my account, right? So in this, it happens some scenario because what the bank has suggested me that when that person will be of 18 age, then they can go for an independent or full-fledged account. Otherwise, he will be a minor account. So this is how sometimes it happens during the transaction, when we have to reflect that the existence of a relationship is based on to the existence of another relationship, right? So in this way, with the reference of this example, you can just correlate that when this entity or weak entity relationship will be required. And sometimes it also happens that a single attribute has more than one value. Like I'm taking one example. Let's say someone is asking me that how many languages you are familiar with, how many languages you can write, speak, and even read well.
So I think I said that I can read three languages: English, Hindi, and Punjabi also, right? So in this example, the single attribute is reflecting more than one value. Language is known, or even if I'm saying, let's say I know French also, so the value will be 4, and some people will be having 1, some people will be having 2. So sometimes it happens that depending upon the situation, the value of a particular attribute keep on changing with the parameters passed to it. So that is reflected with the help of multi-valued attribute. Key attribute, if you are saying that in a student table roll number is the primary key, so to reflect by means of diagramming approach, if I want to reflect that this is the key attribute of my table, so I will just underline that thing. So this underline is a reflection, is a kind of reflection that we use in the ER diagram to reflect this idea that okay, in this particular table, this is my primary key. Next one is composite attribute. Sometimes by means of a single value, we cannot explain the entire value of a particular attribute, like the address. The well-known example is address. If I want to write the address of PCTI, I write UU11 AP Market, Pitampura, Delhi, India, like this. So it means to reflect a single address value, you require more than one attributes together. So that scenario will help us or will encourage us to take this composite attribute over here. Although I can increase more number of circle over here. Now let me show you one high level kind of view of any ER diagram where this is how an entity is related with that of the another entity, and in between these two there is a kind of relationship. Now takeaway point for you over here is that never ever use arrow while connecting two entities or relationship with one another. These are the simple, that is for the labeling purpose I have mentioned here. Although when these lines are connected with one another, no arrow should be there. There should not be any directed arrow. Direct, simple, normal connection must be there, right? Another, every entity must have a single attribute which you can consider as a key attribute. Now you look at this. There is some sort of symbolic notation also that we can use while connecting different symbols of the ER diagram. So one-to-one relationship, for this purpose we use this symbolic notation. One-to-many, I mean many, it is reflecting many symbolic notation. It is one and only one. This is 0 or 1. This is many or 1, and this is 0 or many. So this is we use when we connect two entities with that of the another one. So now you all can see here, although there is a slight mistake. Okay. There is a slight mistake. Let me correct it first. Now, how will you understand this thing? At the left hand side as well as at the right hand side, if two entities are connected with one another and the association is like that the one record of A table matches with the one record of B table, then that kind of association is called as a one-to-one association. Similarly, one to many, these abbreviation, this symbolic notation we have already discussed above. So now you just look at this diagram which is in front of you where my mouse pointer is rotating. How I will understand this ER diagram? I'm covering the first part now. One company is can have one employee or can have many employees also, because this symbol is reflecting one part. One company can have one employee, one company can have many employees also, right? Similarly, how I can understand this scenario, the second one? Anyone would like to help me? Yes, how I will understand this thing? Many employees can be the part of many projects,
Many employees can be the part of none of the project, or one employee can be the part of many projects or none of them. So this is how this symbolic notation is giving you a kind of idea that how in the ER diagram things are get connected with one another. Clear everyone? Yes, quickly type into the chat window. Yeah, Pallav, multi-valued, I have just taken the example of that language is known, or let's say I'm in your terms, I ask about that आपको कौन कौन सी languages आती हैं, तो आप बोलोगे मेरे को C भी आती है, C++ भी आती है, Java भी आती है. So in your case it is 3. In my case I know only C language, so I will go for C. I will type 1. Yeah, clear? Everyone is clear whatever we have covered till now? Okay. Yes, ma'am. एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको. यस सर. थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. अब देखो जरा एक बार अंडरस्टैंडिंग निकालो, इतने से ही आइडिया लग जाएगा आपको. आप वो नाउन और वर्ब वाला कंसेप्ट यहाँ याद रखना. लुक एट दिस. टीचर मेंटेन फीडबैक. What kind of action is being taken between these two entities, that is teacher and feedback? These what we call it as a relationship name must be very specific. We have to write whatever word we are writing here, it should be done in a very mindful way, right? Feedback it should be given by user. User make discussion, teacher answers the discussion. So you all must be able to get some idea that how the things are related with one another. Although there are many blunder also in this diagram, to my understanding. मैडम Now you all can अगर see. हमें हाँ बोलो. मैडम यूजर आईडी हमें क्यों लिखने की जरूरत है फीडबैक में? हमने रिलेशन तो दिया है ना यूजर के साथ. कहाँ पर कह रहे हो आप? फीडबैक This में one. हमने एट्रीब्यूट्स में लिखा है ना हाँ, तो यूजर आईडी. फीडबैक कौन से? आल्दो फीडबैक बड़ा एक लिबरल कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें यूजर आईडी की इतनी जरूरत नहीं है. बट लेट्स से अगर मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर है, आई एम लुकिंग फॉर द फीडबैक ऑफ दैट ओनली. मेरे स्टूडेंट है जो हमारे पीसीटीआई के स्टूडेंट एग्जांपल के लिए आई एम कंसीडरिंग. सो आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दैट हु हैज शेयर्ड दिस वंडरफुल फीडबैक. सो फीडबैक यूजर आईडी इज इन दैट context only. Although feedback, we know it very well that it should be independent of all other, anonymous. It should be done in this way. If you want to skip, you can skip. But the idea over taking here is just to identify the person that who has shared this kind of feedback. This is the only idea. मैडम अगर हमारे पास एट्रीब्यूट में अगर फॉरेन की हो तो रिलेशन हम दे रहे हैं तो हमें तो भी लिखने की जरूरत है? नहीं, फिर जरूरत नहीं. आपने फॉरेन की से पहले ही काम करवा लिया ना. ओके. फॉरेन की तो वैलिडेशन ही अप्लाई करवा रहा है ना उसका, तो वहां सब वेरीफाई हो गया. तो आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो. So I hope you all are getting some idea, although I told you that there is some sort of blunders over there, that whenever you are going to create this kind of diagram, always you should Control C, Control V. Just copy paste the one symbolic symbol and then put it in this way so that all the shapes should be of consistent way. It should be in a consistency. Now you look at this diagram, this ellipse. This is too bigger than others. So it is not giving you a better idea. So while creating the ER diagram, we have to take care of all these aspects also. Either you put the font name to be smaller and all. In this way you can manage it. So the idea is just copy paste the thing here so that the consistency in the size of the symbol must be there. You can maintain up to which level you can maintain it, right? There is much, yeah.
And when you have to show the relationship between two entities, you can use this symbolic notation 1 or m. Although in mathematics term, it is recommended that it should not be m, it should be n only. But most of the books and most of the informative stuff that we refer, that reflect this notation, and it is recommended also now. So we can use m also. So it means many teacher. Now how I will understand this thing? This m is associated with teacher. So many teacher maintain feedback. Many feedback. Many feedback will be given uh, by the user. A single user can give many feedback. So in this way you have to mention this thing. So when your project report will be evaluated, we put a special emphasis on that how this relationship you have set up. Either the things are connected well, there should not be any kind of overlapping and all. So all these are the parameters that we take care while checking your project reports and all, right? Although best example I have already shared with that synopsis document that is already approved by the IGNO and all, no flaws are there into that, right? You can refer that one also. So with this, let's wind up now. Quickly just put your video to be on so that I can take your attendance. Any question from anybody's side, whatever we have covered? In the next class, I will give you some assignment based on RRS and all, and maybe some other assignment are waiting for you. So you have to complete it in this period only, right? So सबका नहीं आया. Done. Your attendance is marked. Thank you. Okay. So that's all for now. If anybody has some question, you can raise the question. Or I'm going to wind up now. Yes, ma'am, I have one question. As I already said in the previous session, I was not available. So how am I supposed to maintain the lab record of that session? Somewhere I can get the homework that you mentioned in those lab records. Okay. Lab 1. We talked about library management system. Lab 1 में हमने library management system के ऊपर we had a healthy discussion on that thing, and everyone has given their inputs, and we have run the entire SDLC based on to the library management system. And in the lab 2, let me clear you on this part. In lab 2, we talked about the practical guidelines that we have to take care. We have understood each and everything with regard to that thing. In lab 3, we talked about the क्या करा था हमने last class में. Ma'am, can you put these all in the chat so we can take a snapshot? Already I have put up it into the chat window. Lab 1, lab 2. Third part में हमने क्या किया था? Yeah, complete SRS, a synopsis making procedure we have gone through. 25-page document, or we can call it as a synopsis making procedure, or discussed.
or lab 4. Today is the lab 4th session, and in this you have all prepared the scope statement. For RRS, discussed on it, and then we have covered ER diagram also. So everything is now documented. So this is the plan of action that we have already covered under the lab sessions, right? Or in the next class, I am planning to have not only the ERD based on, you all will prepare based on the current understanding, and then you will showcase and whatever challenges we will be facing. So whatever idea you have prepared today for the, RRS kind of software, so that you will transform in the form of designing documents and all, right? So that's all for now. Any other question from anybody's side? Okay. Thanks, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम चला गया। असाइनमेंट सबका हुआ है क्या? असाइनमेंट रेडी हुआ है किसी का? मैम चली गई। पहले कोई ये बताओ कि वो जो फोल्डर बना है उसमें रखना क्या है? टॉपिक्स मैम ने बता दिए, अब उन टॉपिक्स का मैं क्या करूं? लैब फोल्डर में क्या मेंटेन करना है, उसमें क्या डालना है, किस बेस पे लैब रिकॉर्ड के मार्क्स देंगे? किसी को पता है? नहीं। हाँ, हम स्टूडेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे स्टूडेंट की कोई बास्तेज के लिए। हेलो 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 मेरा बात सुन रही हो क्या? हेलो